ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने सोमवार को आव्रजन पर नए कड़े नीतिगत उपायों का ऐलान किया। इसमें नागरिकता चाहने वाले प्रवासियों के लिए प्रतीक्षा अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करना शामिल है। इस कदम का लक्ष्य अगले 5 सालों में आव्रजन के आंकड़ों में खास गिरावट लाना है। नए सिस्टम से ब्रिटेन में 5 साल तक रहने वाले भारतीयों सहित किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आप बसने और नागरिकता हासिल करने की मौजूदा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। नए नियम अंग्रेजी के उच्च मानक को सुनिश्चित करने के लिए हर इमिग्रेशन रूट पर भाषा संबंधी जरूरतों को भी सख्त करेंगे। The graduate route duration, which has been reduced from 24 months to 18 months, this will compress the timeline which is available to students to secure a job, especially if the students are enrolled in a one-year master program. The settlement eligibility period, which is now doubled from 5 to 10 years, it makes long-term plans more complex. Financial requirements have gone up for if the student is staying in London, it has to be 1,483 pounds per month, and this is 1,136 pounds per month outside. Now, this obviously impacts students who are coming from modest income backgrounds. English language criteria has become stricter. While most of the Indian students go through their schooling and undergraduate degree in English language, this will become more challenging for people who are at the bottom tier in terms of English speaking skills. The rules obviously have changed for dependents as well. However, I note that graduate route has not been removed. स्किल्ड वर्कर रूट को भी कड़ा किया जाएगा और न्यूनतम योग्यता को स्नातक स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा। विदेशी छात्रों के लिए पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की अवधि घटाकर 18 महीने कर दी जाएगी। वर्तमान में उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने के बाद 2 साल तक ब्रिटेन में रहने की इजाजत मिलती है। I think initially these reforms will definitely reduce immigration to the UK, and I think since we are talking not just about India here, these changes are made for everyone from all around the world, and I believe that for a lot of people from other countries, maybe post-graduation work permit was an important aspect for them to go to the UK. So students will, with that motive, will definitely be suffering. But if you're going there to study, not really to settle there, I think it will help you to stay focused. And I believe that it might even funnel the bad crowd, and the more serious students will be going to the UK from now. नए नियमों का विवरण नए आवर्जन श्वेत पत्र में दिया गया है। इस नए ढांचे के तहत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान देने वाले डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और एआई लीडरों जैसे बेहद कुशल लोगों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ब्रिटेन की लगभग हर वीजा श्रेणी पर इसका असर पड़ने की आशंका है। हेल्थ और सोशल केयर श्रेणी के वीजा को खत्म किया जा सकता है। बड़ी संख्या में भारतीय और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के लोग इस श्रेणी के तहत वीजा के लिए आवेदन करते हैं। Well, we have very recently signed the free trade agreement just a few days ago, and normally we are trying to have a migration mobility agreement as an integral part, because India supplies a large skilled workforce and wants to see that there is a smoother processing and transfer of the workforce, skilled workforce. So that is something that India will continue to ask and take up officially with the government. Of course, I'm sure that an assessment, impact assessment will be made by the concerned authorities in the government so that this matter could be taken up through bilateral channels. But for the moment, there are several roadblocks that are going to, if not deny, at least delay the whole process. So there would definitely be a certain impact. I don't know if you remember that during the pandemic, when certain vaccines that we were produced or giving in India, the British, whose vaccine was being produced in India, refused to recognize that vaccine for travel to our students were stuck. They'll have to take a certain vaccine that the Britishers wanted. And that's when Dr. Jaishankar took it up bilaterally with the then foreign minister and started the same kind of delays, visas and things like that. And so we'll have to be a bit reciprocal in that.
ब्रिटेन के चुनावों में आव्रजन विरोधी रिफॉर्म पार्टी की हालिया बढ़त के बाद स्टॉर्मर पर प्रवासियों की संख्या में कटौती करने का काफी दबाव रहा है। जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक काम पर रहने की अवधि, अंग्रेजी भाषा के उच्च मानक और पोस्ट स्टडी वर्क के कम विकल्प कुशल भारतीय पेशेवरों और छात्रों के ब्रिटेन जाने की राह में रोड़ा अटका सकते हैं।